अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड आर इज इक्वल टू 5, टी इज इक्वल टू 8, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। आल्सो फाइंड आर व्हेन t is equal to 64 and r t when r is equal to 20. So what will we do? Firstly, which is that हमारे पास रिलेशन क्या है, r is directly proportional to t। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे, हमारे पास आ जाएगा r is equal to k t, k is constant। k की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, k is equal to r by t। सो r की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5, t की वैल्यू है 8। सो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/8। नाउ फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, find r when t is 64। So what will we do? We use this relation r is equal to kt। k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/8, 5/8 t। सो r फाइंड करना है हमने। t कितना गिवन है हमें? t गिवन है 64। सो r इज इक्वल टू 40। r कितना आ गया हमारे पास? 40। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, find t when r is 20। So again we use this relation r is equal to 5/8 t। t फाइंड करना है हमें, r गिवन है। सो t is equal to r into 8/5, r is 20। So t is equal to 32। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।